So today we will see chapter number 19, unit 1, index number. So index number is same as time series. We have seen that time series is the collection of data according to time. Same as index number is also the collection of data according to fixed time interval. But both have some different concepts. So in index number we will see what are the use of index number, how many index numbers are there. Okay, so first I will explain you simple. First is simple index number and weighted index number. In simple index number, only if suppose we want to find the index number for price, then we will take only the price. If we want to find this index number for the quantity, at the time we will take only the quantity. But weighted index number, in the concept weighted index number, we have to assign some weight to each index number. Okay. So this weighted index number comes have some 6 different formulas given by 6 different scientists. So I will explain all those formulas also that we have seen in 11th standard. So 11th or 12th standard you have seen index number chapter. So you are familiar with all those formulas. Okay, so again I will explain you. So simple index number, first simple index number, in that first one is simple price index number. How we will write it? P01. Remember 01, 0 refer for the base and 1 for the current year. Base year, current year is equal to summation of P1 upon summation of P0 into 100. This is what simple price index number. Similarly, simple, if you want to write for quantity, simple quantity index number, just put Q at the place of P, then it will become quantity index, summation Q1 upon summation Q0, or we can write small q, Q1 upon Q0 into 100. This is what simple quantity index. One this simple price index and simple quantity, also known as aggregated index number. Aggregate, we all know aggregate means total. So here we are taking total of all prices of current year. Here we are taking total of all prices of the base year. That's why, because of this total, it is also known as aggregated. Whenever we are taking summation, that is known as aggregated. Okay. So simple aggregated price index and quantity index we have seen, and similarly one more thing is there, value index. Just like price index and quantity index, one more term is there, that is value index number. It is denoted by V01 because its name is value index number, so it is denoted by V, and its formula is what? See, summation P1 Q1 upon summation P0 Q0 into 100. Now why its formula is like this? P1 refers the price, Q1 refers the quantity of the current year, P0 refers the price of the base year, and Q0 refers the price of the quantity of the current year. Suppose if I will give you that the 1 kg of rice is 70 rupees, 1 kg of rice is 70 rupees, 1 kg, some brand rice is there, that its rate is 70 rupees per kg, and we have purchased 2 kg, then what will be the value for that 2 kg? Value will be what? 70 into 2, value will be 140, right? So what you did, you multiplied quantity by the price to get value. Same way the formula is made. What they did here, they have multiplied price by quantity to get the value for current year, similarly for the base year. So this is what value index number. Now we will see the weighted index number. Then I will explain you what is CLI. See, in weighted index number there are
formulas. First one, less pairs index number. So you have to remember only one line about each and every formula. So what line you have to remember about less pair? That it takes weight as base year quantity. What weight it takes? It takes base year quantity as weight. So formula of less pair is what? P01 of S is equal to summation P1 upon summation P0. Its weight is Q0. So Q0 into 100. Okay. So this is what? Less pairs index number. Second one is purchase index number. Now it take weight as current year quantity. Current year quantity is what? Weight. So its formula will be like this: P01 of purchase equal to summation P1C upon summation P0. This summation P1, summation P0 will be fixed in each formula. Just you have to multiply what weight the formula is taking. In this formula, it will take current year quantity. So it takes weight as current year quantity. So we have to multiply here Q1, here also Q1 into 100. Third formula is Fisher's price index number or index number. So Fisher's index number is what? It is geometric mean of less pair and purchase. What is geometric mean? So see, P01 of Fisher will be equal to root of L into P. Then you can write the formula. Whatever formula given in L and P will be the where we have to take the product and root, because Fisher is the geometric mean of less pair and purchase. Okay. These are the three formula which we have seen in board. Again, I am revising all those formula. You have to remember which formula is taking what weight, because sometimes such type of questions can ask in exam. Means in less pairs, what it takes as weight, like this. Fourth one is what? Drawbish-Bowley index number. Now Drawbish-Bowley is what? It is arithmetic mean of less pair and purchase. So how we will write it? P01 of DB is nothing but L plus P by 2. You can put the value of L and P, which I have explained in the last of this. So you can put the both value, take the sum, divide it by 2, you will get Drawbish-Bowley's index. Fifth one is Marshall Ageworth index number. Now it takes, its weight is what? Its weight is sum of current and base year quantity. Its weight is sum of current and base year quantity, or sometimes you can write like this, or arithmetic mean of current and base year quantity. Okay, same. Next statement is same. So see, P01 of Marshall Ageworth, so ME is what? Summation P1 upon summation P0 is fixed. Here we can take either sum of base and current year quantity, or we can take their arithmetic mean. Why? Because if you take arithmetic mean, then you will divide it by 2. Here also you will divide it by 2. Then into 100. Both have same meaning, because both divided by 2 get cancelled, and at the end you will get Q0 plus Q1. So you can say that it is taking the weight as sum, or you can say it is taking the weight as arithmetic mean. Both these statements.
So Walsh price index weight is what? Its weight is geometric mean of base and current year quantity. So its formula will be what? P01 of wall is equal to summation P1 upon summation P0 root of Q0 Q1, here also root of Q0 Q1 into 100. This is Walsh formula. All these formulas we have seen in this 12th standard. Now these are the weighted index. Then we have seen simple price, simple quantity and value index. Now we will move to some other formulas also. What is chain index? Sometimes the price relative, such terms can be asked. So what is price relative? It is what? P1 by P0 into 100. Such term is known as price relative. Okay. Quantity relative, Q1 by Q0 into 100. Now, chain index. What is chain index? Now, see its formula. It is link relative into chain index of previous year divided by 100. Now, what is link relative now? Same as this formula, this relative formula. Link relative is what? Price of current year upon base year into 100. Or this will give you link relative, then chain index of the previous year. Or sometimes link relative is find on percentage, then at that time we can take 100. If we are not interested in percentage, then 100 is removed. P1 or P0 is also a relative. So this is what chain index. When I will solve the exercise first of this chapter, at that time you will get all these concepts clear, and all this theory will revise there because while solving question you will be more clear what are all these formulas. Okay, so first you have to remember this formula. That's why I am saying you. Next one is deflated value. It is what? This formula is what? Current value. You have to remember only formulas because we don't have that much use of all this thing. So deflated value is what? Current value upon price index of current year. Okay. And last, shifted index means we can shift the base year or just base year of our index number by using this formula. So it is equal to what? Original price or original value upon shifted price. Original price upon shifted price into 100 means जिस ईयर के लिए आपको फाइंड करना है उस ईयर की प्राइस, और आपको आपके इंडेक्स को जिस ईयर में सपोज आपने 2020 की इंडेक्स फाइंड की है और बेस लिया था 2015, लेकिन अभी आपको आपका बेस चेंज करना है, 2015 नहीं रखना है, उसी के लिए 2016 या 2018 बेस लेना है, तो आप वो वाला शिफ्टेड प्राइस ले लो, इंटू 100 करो, you will get the shifted index number. So all these formulas we will solve in the exercise. Okay, now I will start some theoretical question of first set. Here we have only one set where all the questions are theoretical. In the additional type question we will find some numerical question. So I will solve additional question where some difficult numerical questions are given, and the remaining questions you have to practice. Okay, so in this exercise, question number 1. Okay, I will one by one I will read all the questions, and whatever difficulty is there I will explain you. So question number 1 is what? A series of numerical figures which show the relative position. Series of numerical figures. So index number is what? It is the series of the numerical figures, and it so shows relative position. So its answer will be what? Index number. Okay. Question number 2 is what? Index number for the base period is always taken as 100. Remember this. Whenever the base year's index is not given, or whenever we are going to solve anything, then we will take its index as 100. Base year's index as 100. So its answer will be D.
Question number 3. Dash play a very important part in the construction of index number. Weights, classes, estimations. So classes, estimation, all these things have no sense. So only the senseful thing is what? Weights. So answer will be A. Dash is particularly suitable for the construction of index number. Now see, in the construction of index number, we have seen arithmetic mean is also used and geometric mean is also used. And in option we have both. But the answer is C, geometric mean. For fourth question, answer is C, geometric mean. The reason behind that is what? Geometric mean is used by Fisher's price index number. And that will be the best ideal price index number. That's why the the best price index number uses geometric mean. That's why here answer is what? Geometric mean. So according to question, answer will change. Why the means which one is great? When we compare, when we say the arithmetic and geometric mean both are used, at that time which one will be more valuable? So we have to pick up that one. Agar option ये होता both arithmetic and geometric mean, then the answer will be both. But here both we don't have, so geometric mean will be the answer only. Fifth question. Index numbers show dash changes rather than absolute amounts of changes. So it shows the percentage changes. Suppose if you got the index number for some year as 150, then it means what? 50% increment is there in the prices, because 150 we are comparing with base year and we assume that base year's price is 100, so 50 is more, that its meaning is what? 50% is more. Question number 6. The dash makes index number time reversible. Okay, so some tests are also given in the concept of index number. First is unit test. Now what is the meaning of unit test? If the index number is free from the unit, then we can say that it's satisfying unit test. So all the tests, all weighted index satisfy this unit test. All are satisfying. All satisfy unit test. If we accept simple प्राइस इंडेक्स, बिकॉज सिंपल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि समेशन P1 बाय समेशन P0 इंटू 100 जब हम करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो प्राइस के टर्म्स में आएगी, क्योंकि इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है. जब आप क्वांटिटी के लिए करते हो तब भी यही बोल सकते हो, सिंपल प्राइस इंडेक्स और सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स भी बोल सकते हो. क्वांटिटी के लिए करोगे तो समेशन Q1 बाय समेशन Q0 इंटू 100 आएगा, तो ये भी क्वांटिटी के टर्म्स में आंसर आएगा, ये प्राइस के टर्म्स में आएगा. लेकिन वेटेड में कैसा होता है कि P1 के साथ Q0 Q1 कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है, मींस प्राइस के साथ क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाती है, सो उनकी यूनिट नहीं रहती, इसलिए वो सब इसको सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि उनकी यूनिट नहीं आ रही है. बट सिंपल वाले जो है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे यूनिट टेस्ट को. सेकेंड टेस्ट इज टाइम रिवर्सिबल टेस्ट. नाउ सी P01 refers what? P01, always we are writing P01. Its meaning is what? We are calculating the current year index on the base year. Current year on the base year. Its meaning is what? 1 on 0 हम फाइंड कर रहे हैं, करंट का 0 पे फाइंड कर रहे हैं. वैसे ही अगर P10 होता तो हम 0 का बेस को करंट से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? करंट को बेस से कंपेयर कर रहे हैं P01. तो अगर हम टाइम को रिवर्स कर देते हैं, मीन्स अब 0 को 1 कर देते हैं और 1 को 0, ये टाइम है, बेस करंट बेस रिवर्स कर दिया. और अगर ये ऐसा करने पे ये वैल्यू अगर 1 आती है तो ये टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी. लेकिन ये टेस्ट कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता. अब नाउ द पॉइंट इज व्हाट? हाउ टू चेक दैट which index is satisfying this test. Then it is very simple. If you want to test, then use all the formulas, 6 whatever I have given you in the last 6 indexes. You can take one by one. फर्स्ट जैसे लास्ट पेयर्स का P01 लो और वैसे ही उसके लिए P10 बना. मीन्स उस फॉर्मूले में क्या करना है, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 0 लो और जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1 लो, तो 10 का फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. जस्ट रिवर्स कर दो. प्रोडक्ट लो, अगर 1 आता है तो लेस पेयर सेटिस्फाई करता है. बट दिस थिंग इज प्रूव्ड दैट लेस पेयर्स पासेस ऑल दीज आर नॉट सेटिस्फाइंग टाइम रिवर्सिबल टेस्ट.
only Fisher satisfy, remember this, only Fisher satisfy time reversible taste. Okay, and Lesper, Parshas, all these are not satisfying time reversible taste. Third taste is factor रिवर्सिबल. ना जैसे कि यहाँ पे टाइम रिवर्स ऑफ फैक्टर ही रिवर्स हो जाएगा, मीन्स प्राइस को हम चेंज कर देंगे क्वांटिटी से. मीन्स फॉर एग्जांपल P इज द फैक्टर प्राइस 0 1 मीन्स वी आर कंपेयरिंग करंट विथ बेस. इफ वी रिप्लेस it by quantity, it will become Q01, and when you take these two product it will give you V01. If it is giving like this, then all the index are satisfying, but it is also proved thing that Lesper, Parshas, all these are not satisfying factor reversible taste. Only Fisher satisfy factor reversible taste. Okay. So you can take the formula of Fisher, and here what you have to do, at the place P01 I have given you how to write Q01. To write Q01 you have to write Q at the place of P and P at the place of Q. Just interchange कर दो P Q को उसी फॉर्मूले में. You will get Q01 formula, multiply, you will get V01 only for Fisher, because Fisher is satisfying factor reversible taste. And last, fourth one is the circular taste. Now this taste is also this taste is not satisfied Lesper, Parshas, Fisher. All these are not satisfying this taste. Only the geometric mean of relatives. Which relative? Price relative. Geometric mean of price relative. Geometric mean of relative price relative, same thing. Or the weighted relatives with fixed weight, जिनका weight fix होता है, वो सिर्फ इस टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव कैसा होता है? P1 by P0 इंटू P2 by P1. इस तरीके से जो हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, मतलब ये आगे चलता जाएगा, वो ही इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है. बाकी कोई भी इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता. ना लेस्पेस, ना पास्चेस, नो फिशर, एनीबडी इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस. ओनली the geometric mean of relatives is satisfying. Okay, so these are the four tests which are given. This question number 7. Price relative is equal to what? It is the price in the given year, means current year, divided by price in the base year into 100. Option A. Index number is equal to, it is the average of the prices. Okay. 9th one. The dash of group indices gives the general index, arithmetic mean. When जब ग्रुप में बहुत सारे इंडेक्सेस है, तो हमको जनरल इंडेक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? उनका एवरेज फाइंड करना पड़ेगा. एवरेज ऑफ इंडेक्स नंबर, एंड सिंपल एवरेज ऑफ इंडेक्स नंबर इज व्हाट? अरिथमेटिक मीन. सर्कुलर टेस्ट इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर. डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सिबल टेस्ट. सो टाइम रिवर्सिबल टेस्ट का एक्सटेंशन कौन सा है? सर्कुलर टेस्ट. वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाई विच टेस्ट? Time reversible, circular, factor reversible taste. Then weighted geometric mean of relative formula satisfy time reversible taste. Okay, weighted geometric mean of relative formula satisfy which taste? Just in circular taste मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि circular taste में हमको एक यहाँ पे नोट पॉइंट दिया है. इफ यू सी इन योर मॉड्यूल इन सर्कुलर टेस्ट, डार्क लाइन में नीचे दो लाइंस देंगे. द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड द वेटेड एग्रीगेटिव with the fixed weight made this taste. So weighted geometric mean of relative formula satisfy circular taste. Factor reversible taste is satisfied by Fisher. Lesper's formula does not satisfy. Lesper's formula does not satisfy factor reversible taste, time reversible taste, and circular taste. All the above. A ratio or an average of ratios expressed as a percentage is called an index number. 16th question. The value at the base time period serve as the standard point of comparison. So this is true. An index time series is a list of index numbers.
18th. Index number are often constructed from, not from frequency, not from class. Sample means data. So from data we can construct index number. Dash is a point of reference. So base period is a point of reference. Question number 20. The ratio of price of single commodity in a given period to its price in the preceding year is called, means given period means P1 to base year means P0. P1 by P0 is called price relative. Option C. Sum of commodity prices in the current year upon sum of the commodity prices in the base year into 100. When we are taking simple price P1 by P0, it is known as relative, and we are taking sum, it is known as aggregative price index. Chain index formula is what? It is link relative of the current year into chain index of the previous year divided by 100. Question number 23. P01 is the index for time 1 on 0. Remember, it is looking like 01, P01, but read as 1 on 0. And second question, P10 is 0 on 1. Means we are comparing base year with current year, 0 on 1. Question number 25. When the product of price index and the quantity index is equal to the value index, then the test which hold is factor reversible test. Because in factor reversible test, P01 is multiplied by Q01 and we will get a value index V01. So this is what factor reversible test. Question number 26. The formula should be independent of the unit in which or for which prices and quantities are quoted in only unit test. Laspeyres method and Paasche method do not satisfy. Laspeyres, Paasche are satisfying unit test because they are free from unit, but they are not satisfying time reversible and factor reversible test. Right? So B and C will be right. The purpose determines the type of index number to use, right? If we have purpose, then we can recognize which index number we have to use. So this statement is true. The index number is a special type of average. Yes, it is true. The choice of suitable base period is at best temporary solution. Yes, because it is not a fixed solution. When we are choosing the base period for only for one comparison, for the same year we can change its base also for some other comparison. So it is only a temporary solution, not permanent. So this statement is true. Fisher's ideal formula for calculating index number satisfy which test? Fisher ideal formula satisfy which test? So it satisfy unit test also and factor reversible test also. So answer will be C, both. 32. Fisher's ideal formula does not satisfy circular test. Dash satisfy circular test. Then geometric mean of price relative or weighted aggregate with fixed weight satisfy circular test. Laspeyres and Paasche method do not satisfy time reversible test. There is no such thing as unweighted index numbers. Yes, this statement is false because there is unweighted index numbers are there. So this statement is wrong. ये बोल रहा है कि unweighted index number ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है. So this statement is false. Theoretically, geometric mean is the best average in the construction of index number, but in practice mostly the arithmetic mean is utilized. For the construction of index number only the geometric mean will be best. I have explained you in the last example also why we are taking answer as geometric mean, because it gives because of geometric mean we can construct Fisher ideal index number, and Fisher is ideal, it is the best index number, that's why the answer is geometric mean. Otherwise for other concept arithmetic mean will be the best, but in index number geometric mean. Question number 37. Laspeyres or Paasche or the Fisher's ideal index do not satisfy. All these are not satisfying circular test. Dash is concerned with the measurement of price changes over a period of year when it is desirable to shift the base. Circular test. In circular test I have given you example, we can change the base also. So this is related to circular test. The test of shifting the base is called circular test. The formula for conversion to current value
is deflated value is the formula of conversion into current value, and formula of deflated value is what? Price value of the current year upon current value. Price index of the current year upon current value. Next one, shifted price index is what? Original price upon price index, where we have to shift our index into 100. So this statement is true. The number of tests of adequacy are 4. Unit test, time reversible test, factor reversible test, and fourth one is circular test. We use price index numbers to measure and compare. Simple aggregate of quantity is the type of quantity indices. Indices means index. Okay. In additional question, I will solve some numerical type of questions. So the starting questions are very easy, you can solve. I will solve some questions which are difficult for you. Okay, and you have to practice the remaining question. Okay. Once again I will explain you the circular test. I think circular test का थोड़ा सा कुछ मिक्स हो गया है. 2022 हमने लिया 2015 और दूसरा 2015 जो हमने लिया था 2010. यहाँ पे इंडेक्स आई 150 और यहाँ पे भी आई 150. Now we are going to find 2020 index with on 2010. ठीक है, 2010 is base, so we will consider इसकी वैल्यू है 100. अब 2010 से 50% इंक्रीमेंट दिख रहा है और यहाँ पे भी 50% इंक्रीमेंट दिख रहा है. तो हमने क्या किया कि 50-50 100% डायरेक्ट इंक्रीमेंट कर लिया, 1 by 1 करना है. ओके, सो हम क्या करेंगे, 2010 का 100 है तो पहले 15 तक 50% इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 100 हो गई. अब प्राइस 150, ये 2015 तक आ गया. अब 2015 से हमको 20 तक जाना है, सो 20 to 100 बन जाएगा, ये 20 to 10 बन जाएगा. सो 150 पे 50% इंक्रीमेंट करेंगे. सो व्हाट इज द 50% ऑफ 150? इट विल बी 75. सो वी हैव टू ऐड 75. So it will be 225, not 200. It will be 225. So 2020 index will be what? 225. First 50% I have added in 100. It is 150. Again 50 of 150 I have to add. So it is 75. It will give you 225. This is what circular test. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. सो एडिशनल एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन देखेंगे. सो इफ द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेस एट a place in 1994 is 250 with 1984 as base year, then the prices have increased on an average by how much percent? जो in 1994 price index is 250, base year is 1984, so always we are taking base year as 100. So how much percent increment is there? Option B will be correct. Answer is 150%. Question number 17. If the prices of all commodities in a place have decreased 35% over the base period prices, then the index number of prices of that place is now. So 100% base year का होता है, अगर वहाँ पे decrease हो गया 35% से तो बेस ईयर का प्राइस क्या आएगा? इंडेक्स 65% आएगा. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. जो भी न्यूमेरिकल्स है इसके वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. थ्योरी क्वेश्चन बहुत इजी है, आप ये सब सॉल्व कर सकते हो. ओके, अब डायरेक्टली हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वन मोर थिंग, CLI कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों भी सेम होता है. दोनों से हमें
वो पर्टिकुलर फैमिली है या पर्सन है या किसी एरिया के बारे में बात हो रही है तो उनका लिविंग स्टेटस पता चलता है कि ऑन एन एवरेज वो मंथली या वीकली कितना खर्च करते हैं, तो उसके ऊपर से ये कंस्ट्रक्ट होता है। तो सीपीआई का भी कंस्ट्रक्शन वैसा ही होगा, ठीक है। तो जहां जहां हम सीएलआई यूज करते हैं वहां वहां हम सीपीआई भी यूज कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे सीपीआई दिया है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1957 के लिए कितना है, इट इज 313 विथ 1940 एज द बेस ईयर, और 1940 का कितना है 96। द एवरेज मंथली वेजेस इन 1957, ओके यहाँ पे ये तो हमको सीपीआई दिया है, उसके बाद उनकी सैलरी उनके वेजेस भी दिए हैं, कितना दिया है 1957 का ₹160। देयर रियल वेजेस आर, सो रियल वेजेस फॉर्मूला इज सेम, रियल इनकम फॉर्मूला, इट इज रियल इनकम इज व्हाट, इनकम, you can take either CLI or CPI both into 100. So real income as it is, and real income for all the year, for current year, for base year, it will remain same. So real income is equal to income 330 divided by CPI 160. Right, 160 is the income, 160 divided by 330 into 100, so it will give you 160 into 100 divided by 313, so it will be 51.118. so real income will be 51.11. okay, real income, real wages, all are the same. Next one, option B will be correct. Next is question number 30. In 1980, the net monthly income of the employee was ₹800 per month. The consumer price index number was 160 in 1980. Then it rises to 200 in 1984. क्या rise हो गया? CPI rise हो गया, consumer price index. It has to be, if he has to be rightly compensated the additional DA to be paid to the employees. मतलब 1980 में वो जिस तरीके से रहता था, जिस तरीके की चीज़ें वो कंज्यूम करता था, अगर वो 1984 में भी वैसा ही करना चाहे तो अब क्योंकि अब सारी चीज़ों की रेट बढ़ गई है तो उसको पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए ना, तो उसको डेली अलाउंस कितना मिले कि वो पहले के जैसे अभी भी रह सकेगा। तो हमें पूरा वापस रियल इनकम लेके ये फाइंड करना है कि उसको इनकम कितनी मिलनी चाहिए, और दोनों इनकम में जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आंसर होगा। सो 1980 के बारे में दिया है पहले। इन 1980 द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, सो उसकी इनकम कितनी दी है 800। उस वक्त उसका सीपीआई कितना था 160। फिर 1984 में हमको पता करना है, इनकम दिया नहीं वही पता करना है, और सीपीआई बढ़ गया अभी 200, मीन्स उसका खर्च बढ़ चुका है। सो अगर उसको राइटली कंपनसेट करना है तो कितना एक्स्ट्रा उसको अलाउंस मिलना चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रियल इनकम फाइंड करेंगे। रियल इनकम अभी मैंने फॉर्मूला बताया, इनकम अपॉन सीपीआई इंटू 100। सो रियल इनकम इज इक्वल टू, व्हाट इज इनकम 800 upon CPI 160 into 100. So it will be what, 1 time, 2 time, 500. Real income will be what, 1000 by 2, 500. Now real income for the year 1980 and for the year 1984 it will be same. So now ये हो गया 1980 के बारे में. Now for 1984 again real income formula, but real income is same. We have to put income. What is income? For 1984 it is not given, so it is X. Then CPI is 200 into 100, and real income will be same, so we can put here 500. These two zeros will cancel. 500 into 2, 1000. X will be 1000. X will be 1000 means the salary in the year 1984 will be 1000. It means उसको 1980 में 800 रुपीज मिल रहे थे, तो 84 में उसको 1000 मिलना चाहिए, मीन्स एक्स्ट्रा कितना मिलना चाहिए 200 रुपीज मिलना चाहिए। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट वन,
Fisher's ideal index is the only formula which satisfies time reversal test, circular test, factor reversal test. D, A and C. So Fisher's ideal index is the only formula which satisfy the time reversal test and factor reversal test. Circular test is not satisfied by Fisher. Next one, question number 42. The index number in wholesale prices is 152 for August 1999 compared to August 1998. During the year, there is net increase in the price of wholesale commodity to the extent of, कितने extent में वो increase हुआ? अगर 152 है तो clear है, कभी भी base year का 100 लेते हैं तो 152 है मतलब 52% increment हुआ है, right? Next one. Next one is the question number 47. सिमिलर एक क्वेश्चन आगे भी है, शायद वहाँ पे 1.25 लिया है तो 1.25 नहीं है, वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 125 लेना है. एक सेम क्वेश्चन है इसमें. So if the prices of all commodities in a place have increased 125 times in comparison to the base prices, जो भी बेस की प्राइस थी, सपोज 100 थी तो सारी प्राइसेस 125 से बढ़ गई, तो 100 थी तो अब प्राइस कितनी होगी? 225 हो गई है. तो सबकी 225 हो गई तो ऑन एन एवरेज सबका एवरेज भी 225 आएगा. वी नो दैट जब कभी किसी नंबर का एवरेज निकालते हैं और सारे नंबर सेम होते, कांस्टेंट होते, तो एवरेज भी वही नंबर आएगा, कांस्टेंट ही आएगा. तो इंक्रीमेंट सेम हो गया है. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इंडेक्स नंबर ऑफ क्या आ जाएगी? 225 आ जाएगी. 100 था, 125 से इंक्रीमेंट हो गया है तो इंडेक्स क्या आ जाएगी? 225 आ जाएगी. सी आंसर आएगा, राइट. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 55. For constructing consumer price index (CPI), consumer price index, what is used? Marshall-Ajour method, Pasteur's method, Drobich-Boulez method, and Lespier's method. See, Lespier's method का जो फॉर्मूला है is summation of P1 Q0 upon summation P0 Q0 into 100. This formula is of CLI also. CLI को अभी हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली नहीं, जस्ट उसका थियोरेटिकल पार्ट जो देखा है उसका थ्योरी यूज कर रहे हैं, बट सीएलआई को भी कंप्यूट करना है तो उसके दो मेथड है. एक ये मेथड है और एक फैमिली बजट मेथड, दैट इज समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन W. तो ये दो मेथड से सीएलआई हम फाइंड कर सकते हैं. सीएलआई एंड सीपीआई दोनों भी टर्म सेम है. इसलिए एक यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीएलआई जो है वो वेटेड की फॉर्मूले से अगर हमें एक भी उसको इक्विवेलेंट बताना है तो कौन सा फॉर्मूला उसके इक्विवेलेंट होगा? तो लेस्पेयर का फॉर्मूला उसके इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो सीपीआई की कंस्ट्रक्शन में जो यूज होगा वो क्या होगा? लेस्पेयर्स फॉर्मूला होगा. नेक्स्ट वन 60, क्वेश्चन नंबर 60. Number 60. If the 1970 index with base 1965 is 200 and 1965 index with base 1970 और जब बेस लिया था 1965 तो इतना आया, और 1965 का जब बेस लेंगे 1960 तो इंडेक्स कितना आ रहा है? 150. ओके, द इंडेक्स then the index 1970 with base 1960 कितना आएगा? ये सर्कुलर टेस्ट का एक एग्जांपल है, राइट. 1970 का बेस था 1965 तो 200 इंडेक्स आया, इट मींस 100% इंक्रीमेंट. 1965 का जब बेस 1960 लिया तो 150 इंडेक्स आया, मींस 50% इंक्रीमेंट. तो अगर हम डायरेक्ट 70 को फाइंड करना है और विथ बेस 1960 फाइंड करना है तो क्या होगा? तो इन जनरल हमको पता है कि बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 होता है, 100 है. तो सबसे पहले हम 50% उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे. 100 में 50% इंक्रीमेंट कर दिया तो इंडेक्स आ जाएगा 150 पहला. दूसरा हमको 100% मिला, ये 100% और ऐड कर दो. 150 में 100% मीन्स और 150 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 300. तो 1970 का जब हम इंडेक्स निकालेंगे विथ बेस 1960 तो इंडेक्स कितना आएगा? 300. ऑप्शन बी 300 आंसर आएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन
Question number 73. The prices of a commodity increased by rupees 5 per unit in 1990 to 7.50 per unit in 1995. जो 5 रुपीज थे पर यूनिट जिस चीज की प्राइस 90 में, वो 7.5 हो गई 1995 में. The quantity consumed decreased from 120 units in 1992. कंजम्पशन कम हो गया 1995 से 1990 में, 120 से 90 हो गया. The prices and quantity in 1995 are, prices and quantity कितना दिया है रिलेशन, प्राइस अगर 150% थी तो क्वांटिटी 75% respectively of the corresponding prices and quantity. So what is the product of price ratio and quantity ratio? See, price and quantity हमको दिया नहीं तो उनका प्रोडक्ट कैसे लेंगे? तो परसेंटेज को कन्वर्ट कर दो, 150 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, क्वांटिटी रेशियो आ गया, इनटू दूसरा परसेंटेज कितना दिया है 75 डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो उसका भी रेशियो आ जाएगा. दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, यू विल गेट 1125 डिवाइडेड बाय 10,000, इट विल बी 1.125. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ओनली प्रोडक्ट लेना है, डिवाइडेड बाय 100 into 100 10,000, it will give you 1.125. Question number 76. Consumer price index number goes up. Consumer price index number goes up from 110 to 200 CPI. And the salary of a worker is also raised from rupees 325 to 500. Therefore, in real terms, to maintain his previous standard of living, he should get an additional amount of. उसका CPI दोनों क्लियर है कि पहले कितना था अभी कितना था, उसकी इनकम क्लियर है पहले कितनी थी अभी कितनी थी. फिर भी ये क्या पूछ रहा है कि इन अगर रियल में अगर हमको पता करना है कि उसको पहले के जैसे रहना है, मतलब जब उसका CPI 110 था और उसकी इनकम 325 थी, उसको वैसे उस स्टैंडर्ड से अगर रहना है तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि उसको एडिशनल अमाउंट कितना मिलना चाहिए. तो हमको रियल इनकम के थ्रू ये पता चलेगा. सो व्हाट इज रियल इनकम? इनकम दैट इज 325 divided by CPI 110 into 100. CPI और CLI both are same. Okay, so 325 divided by 110, it will be 295.45. Real income is what? 295.45. Now for ये हो गया बेस ईयर के लिए, जो भी पहले की बात होती है वो बेस ईयर के लिए. करंट ईयर के लिए रियल इनकम विल बी सेम टू 295.45, right? Real income is same for all the year, so 295.45. Now take income is 500 divided by, so इनकम ही हमें फाइंड करनी है. इनकम एक्स ले लेंगे, CPI लेंगे 200 into 100, 20 get cancel, 295.45 into 2, x will be what? 295.45 into 2, it will be 0.9, 590.9. x जो न्यू इनकम आई है, x क्या आई है? करंट ईयर की इनकम. करंट ईयर की इनकम कितनी होनी चाहिए? 590.9. जबकि उन्होंने बताया कितना है कि 325 से 500 बढ़ गई, लेकिन अगर उसको 590.9 बढ़ी होती तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसा ही होता जैसा बेस ईयर में है. तो अगर उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसा ही रखना है तो उन्होंने उसको 90.9 रुपीज एक्स्ट्रा देने चाहिए, तो वापस वो पहले के जैसे उसका जो CPI है वो पहले के जैसा वो मेंटेन कर सकता है. तो ऑप्शन कौन सा है? 90.91. So approximately B option correct आएगा. 90.9, 90.91 both are same. So option B will be correct. Next one is question number 89. Question number 89. Net monthly salary of an employee was 3,000 in 1980. नाइनटीन 80 में उसकी सैलरी कितनी थी? 3,000.
Okay, the consumer price index number in 1985 का CPI है, CPI of 1985 is 250. Okay, with base 1980 as base year. If he has to be rightly compensated, then सेवंथ डियरनेस अलाउंसेस टू बी पेड टू द एम्प्लॉइज. अब हमको नहीं पता सेवंथ डियरनेस कैसे दिया जाता है, फिर ये क्यों पूछ रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इन्होंने क्या किया, 1980 की उसकी इनकम दी, कुछ बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हम रियल इनकम फाइंड नहीं कर सकते जैसे अब तक कंपेयर करके फाइंड कर रहे थे और एक्स्ट्रा जो देना चाहिए वो निकाल रहे थे. ऐसा नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक सीपीआई दिया है, वो भी 1985 का करंट ईयर का सीपीआई दिया, बेस ईयर की इनकम दी है. अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, अगर सीपीआई 250 आया तो इट मीन्स बेस में सीपीआई कितना होगा, हम कंसीडर करेंगे बेस में 1980 में सीपीआई होगा 100. बेस में सीपीआई 100 था और बाद में करंट ईयर में सीपीआई 250 हो गया, मीन्स कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो गया, 150% इंक्रीमेंट हो गया. मतलब सैलरी में भी उतना इंक्रीमेंट होना चाहिए. 1980 की सैलरी 3000 है तो 1985 की सैलरी में 150% इंक्रीमेंट होना चाहिए, तभी वो वैसे रह पाएगा जैसे वो पहले रह रहा था. ठीक है, क्योंकि अभी कुछ नहीं दिया तो हम डायरेक्ट उसकी सैलरी इस तरीके से फाइंड करेंगे. तो 150% इंक्रीमेंट मतलब 3000 का 150% कितना होता है, 3000 इंटू 150 बाय 100. दिस 2 zeros कैंसिल, 0 0 45. तो 4500 उसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए सो दैट वो क्या 1980 के जैसा सीपीआई मेंटेन कर पाएगा. सो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा सी. अगर उसको 4500 एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, इट मीन्स उसको सैलरी कितनी मिलेगी उस वक्त, 3000 तो ऑलरेडी उसकी सैलरी थी, ये एक्स्ट्रा सैलरी है 4500, मतलब उसकी सैलरी हो जाएगी 7500. क्वेश्चन नंबर 92. इफ द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर से 1960 बी, प्राइस इंडेक्स फॉर 1960 is 110.3. okay, and the price index for the year say 1950 के लिए भी दिया है, it is 98.4. then the purchasing power of money is same as the price relative. Purchasing power of the money will be this P1 by P0. P1 means current year price upon base year price. So P1 by P0 will be the purchasing power of the money. So 110.3 divided by 98.4 will be 1.1209 something. So which option is correct? Option number 1 A will be correct answer for question number 92. Okay, so remaining are the same question. बहुत repeated हो गए ऐसे question. So बाकी आप प्रैक्टिस करो और जो भी नहीं आएगा आप मुझे पूछो, मैं आपको बाकी के बता दूंगी कैसे करना है सॉल्व. लेकिन जितना है सब ये इतना ही है, और ये फर्स्ट जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है वो आपको रिपीटेडली वो वाला वीडियो देखना है, क्योंकि उसमें पूरा थ्योरी पार्ट है और वही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो उस पर ही बेस जाएंगे, और जो अभी मैंने सॉल्व किए उतने सारे आपको आने चाहिए, बाकी सारे रिपीटेड क्वेश्चन है. ओके, थैंक यू.